रेस्ट ना चक्कर कौन है कहल फास्ट एत गपिली गोटे कहक आरंभ करी मुझे सब भूल जाऊँगी अनम्यूट करने है गोटे मुवी देखे दे माँ शक्ति दे है से भाया हे प्रभु दे मत टे माने मेमोरी पावर दे है जहाँद्वारा कि मन रखिपारि कि मत माइक को म्यूट करना आरंभ हो जो जोश रे मु कहबी हे जोश सहित मत ऑडियो दरकार है ऑडियो पाए मत मन माने मन पड़िया दरकार जिनस चलतु आज योगा डे है योगा डे एंड वॉइस आसला ना आसला जी आगे बढ़ा ए गोटे क्लास 6 थर म्यूट कली अनम्यूट करने को भूली जाए 6 थर मुझे निज उपर रागिली एत मुझे जीवन के अनम्यूट करेंगे म्यूट करेंगे पुणी आज सका म्यूट कर दीजिए हो चलो तो इंटरनेशनल योगा डे कथा मुझे कहबी आज हूँ 21 तारीख सकाल के जन योगार आउ कहीं डरिकी मत पकई ना मुझे समस्त स्टाटस देखिए डरिकी पकई ना है नाई 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 योगा डे आज पकड़े सार किसी को कहीदेवे हाँ तो सर कम्युनिकेशन कॉन्स्टेबल बैच आना तो ठीक है देखिए हाँ तो चलते योगा डे विषय पढ़ा आम कंटेंट को आरंभ करें 12th एडिशन सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 21 जून 2026 हाँ ए ग्लोबल मूवमेंट यूनाइटिंग मिलियंस फॉर हेल्दियर हैप्पियर एंड हार्मोनियस वर्ल्ड ऑब्वियसली डेट आज हूँ आपंकर के 21 जून 12th एडिशन इंटरनेशनल योगा डे थीम कौन योगा फॉर हेल्दी एजिंग ए वर्ष थीम कौन योगा फॉर हेल्दी एजिंग आपंकर वर्ष थीम हाँ नेशनल वेन्यू कौन रेड रोड कोलकाता वेस्ट बेंगल एंड लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड रेकर्ड अटेम्प्ट कराई 500 बोट रे आपन योगा करा बोट रे बस योगा करा ये गोटे ना मैंने कौन कहल पब्लिसिटी स्टंट अदरवाइज योगा आप को भी जगह करेंगे बट ये बोट रे भी योगा करा देखो योगा को भी जगह एक्चुअली कर बोट हो तुम फ्लाइट रे बसता जिम तुम फ्लाइट रे करें कि योगा फ्लाइट रे कर योगा करें कि नहीं केतरा एमती जिन जो योगा तुम कौ भी जगह करें तो देखिए तो 500 बोट रे हुगली रिवर रे प्रथम थर जिन देखा मिली अच्छा प्रश्न आसला कि इंटरनेशनल योगा डे इंडिया एत जो फेमस ताले ये आरंभ कौटी होता स्टोरी कौन है ये आरंभ होता आप 11 डिसेम्बर 2014 आरंभ होता के 11 डिसेम्बर 2014 आरंभ होता आज के गला सॉरी 11 हाँ माने देखो आसेम्बली कथा उठी से आरंभ के मु रिपीट करुच्ची 11 डिसेम्बर 2014 यूनाइटेड नेशन जनरल आसेम्बली कथा उठी कथा उठा आ डे को डिक्लेयर करा दुटा अलग जिन अगेन मुझे रिपीट करुच्ची कथा उठा आ डे को डिक्लेयर कर दुटा अलग जिन ये जो सेकेंड जिनसा प्रथम सेलिब्रेशन है 21 जून 2015 जिनसा प्रथम सेलिब्रेट करागला 21 जून 2015 सेलिब्रेट करागला आ प्रथम योगा डे थीम योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस प्रथम थीम कौन था योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस था प्रथम थीम आपर कहीं 21 जून बिकज लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर 21 जून ये कहीं ये ईयर सब लॉन्गेस्ट डे हाँ पूरा सब लंबा दिन ये एंड इन द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओके ओरिजिन ऑफ द योगा 5000 वर्ष पूर्व आसी टाइप्स ऑफ योगा कौन आस राजयोग कर्मयोग भक्ति योग एंड ज्ञान योग आप रोचे बाकी आप इंडिया कथा कहे आसांगे गोटे जिन गोटे मिनिस्ट्री आड होती आयुष मिनिस्ट्री आड होती कौन होती आयुष मिनिस्ट्री आड होती देखिपारे सब वर्ष थीम गुड़ा मेंशन कराई है सब वर्ष थीम गुड़ा मेंशन कराई योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस कनेक्ट विथ नेचर लास्ट ईयर थीम टा देखी दियो वन अर्थ वन हेल्थ ओके पूर्व वर्ष हूँ योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी 3 वर्ष थीम देखीदे काम तमाम खेल खत्म एतिक योगा डे विषय ही आपको जानवर अच्छी बाकी ओके बाकी आ कौन रहा तो कथा कौन ये कथा हो जा आगे बढ़िया योगा डे मोदी जी योगा बस जाइए मोदी जी बसिले बट तुम मैंने बसुन कहीं योगा देह भल तो निहाती जाइए कर रामदेव बाबा गोटे अलग प्रकार जोन अच्छा छुआ दिन जोग कहले मैंने कौन रामदेव बाबा हाँ कि नहीं छुआ दिन जोग कहले मैंने रामदेव बाबा आम समस्त जानी आसुँच हाँ बाकी तो पतंजलि आसला आसुचे 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 चली पतंजलि मझे से आप कौन कोरोनार मेडिसिन बाहर करदे दुनिया ही बेपार ये बेपार तो नुह हवा कथा नुह बट दुनिया ही बिजनेस चलती सकाल सकाल उठू उठू मु आरंभ करिया हाफ मिनिट समय नेबी सकाल सकाल उठू उठू मो नजर रे पड़गला कंट्रोवर्सी खान सर कंट्रोवर्सी और मोर रोशन सर जी अच्छा आम दी जन है कंट्रोवर्सी नजर को आसीगला मु अध घंटे सकाल उठू उठू प्रथम कंट्रोवर्सी देखी सकाल ता विषय किसी कहि न कहि आम आगू कथबार्ता हाँ बट अगेन एपटे अभिनय शर्मा एंड
से आमर अंकिता बस्ती सी बसिक पडकास्ट कर देछन अमित क्लर्क किसी गोटे टिप्पणी दे देछन भाई पूरा अलग प्रकार चली अलग प्रकार चलती स्टोरी ओके तो केतले निहाती समय पाइले मत आसर कथबार्ता हेबी तुम मैंने आउ ये लगी जीवनी बट सकाल सकाल अध घंटा मोर से गला मुझे देखी नी बहुत दिन है जिनस आज सकाल सकाल से जिन देखिली आउ से बहुत ही डार्क साइड अच्छी जो मैंने कहते भी डार्क साइड अच्छी जो मैंने कर भी डार्क साइड अच्छी सब जिनसर डार्क भी अच्छी बेटर पॉइंट भी अच्छी कहीं आज टीचर मुझे जानी मैनेजमेंट रही मुझे जानी स्टार्टिंग गोटे जिन आरंभ करी मुझे जानी कि जिनसा कौ वे कौ एंगल जाए ओके कौ वे कौ एंगल जाए गोटे मैंने कम्प्लीटली सब जिन न जाने भी बट तार किसी आस्पेक्ट आई डू नो ओके हो चलते आगू जावा तो ये आपंकर आसीगला कौन देखो ये आमर जा जून मसर डे डेट्स जून मसर डे डेट्स गला हाँ आम आसीजा जून मसर डे डेट समस्त जना अच्छे ना हाँ जून 21 आपर हूँ कौन इंटरनेशनल योगा डे ओके प्रथम प्रश्न आम रिविजन को ओल्ल जावा हाँ 13 ରୁ 20 रिविजन ओल्ल जाए प्रथम प्रश्न आप टिके समस्ते सेशन टी को सब ग्रुप रे शेयर कर दिंतु जे जो ग्रुप रे शेयर कर दिंतु सेशन आरंभ करवा नेटवर्क सर्वे व्हीकल वेर रिसेंटली डिप्लॉयड नेशन वाइड बाय व्हिच मिनिस्ट्री नेटवर्क सर्वे व्हीकल वेर रिसेंटली डिप्लॉयड नेशन वाइड बाय व्हिच मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज इज द करेक्ट आंसर ओके जहाद्वारा कि या कौन कर व्हीकल इक्विप्ड तो एडवांस सेंसर सहित जो आप जे कि व्हीकल सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर डाटा को इन्वेंटरी ऑफ द पेवमेंट हेल्थ माने आमे कहि परिबे कि रोड रो हेल्थ को आपनकर ई करा जे परिबो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहू कोन व्हिच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फास्ट पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट सोलर 1 किए प्रथम लॉन्च करछु व्हाट इज द करेक्ट आंसर व्हिच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फास्ट पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट सोलर 1 तो आंसर कनेला आपनकर यूनाइटेड स्टेट्स इज द करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपनकर मत कोंदु नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर कोन कहूची नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हाँ किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपन मत कहूँ लोकेटेड इन विच स्टेट तो स्टेट ना तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर कौन स्टेट ना गला तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेलंगाना सेट करछि सफारी टूर स्टार्ट करिवो किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोठी किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आपन मानकर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज मोर्तनगारेनो संथा मोर्तनाग्रियन सामथा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज एटा मते कोन जिनसटा कोन तो ये आंसर कोन जिवो आंसर जिवो न्यू स्पीशीज ऑफ डैम्स फ्लाई इज द करेक्ट आंसर एंड न्यू स्पीशीज ऑफ डैम्स फ्लाई इज द करेक्ट आंसर व्हिच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड एंकर द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड 3D atlas of the human brainstem what is the correct answer which institute released anchor the world's most detailed 3D atlas of the human brainstem तो आंसर गला IIT Madras is the correct answer IIT Madras is the correct answer बुझी पाले समझते माने कार किछ कंफ्यूजन रहला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन के जन क्वेश्चन देखिबा ओके ये गला जसपाल राणा रिसेंटली पास अवे कर जाइछन्ती को स्पोर्ट्स सहित एसोसिएटेड आपनकर मते कोन तो शूटिंग इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय अवतार अंडर द इंडिया एआई मिशन तो ठिकाना जो ओडिया इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष ऑब्जर्व करा जाए केबे आपनकर जून 13 रे अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करा जाए व्हिच कंट्री लॉन्च्ड द S330 रॉकेट ए लो कॉस्ट वेरिएंट ऑफ इट्स नेक्स्ट जनरेशन S3 लॉन्च व्हीकल व्हिच कंट्री लॉन्च्ड द S330 रॉकेट ए लो कॉस्ट वेरिएंट ऑफ इट्स नेक्स्ट जनरेशन S3 व्हीकल S लॉन्च व्हीकल तो आंसर करला जापान इज द करेक्ट आंसर जापान इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which institute has developed arsen safe a portable handheld device for rapid arsenic detection in drinking water which institute has developed arsen safe a portable handheld device for rapid arsenic detection in drinking water तो आंसर करला IIT Bhubaneswar is the correct answer IIT Bhubaneswar is the correct answer next देखिए what is the rank of India in the global peace index 2026 global peace index 2026 रे इंडिया रैंक केते मते कहि दियो तो आंसर करला आपनकर 127th is the correct answer 127th is the correct answer the Diamantina fracture zone recently seen in news due to discovery of world's largest whale graveyard is located in which ocean मतलब कौन तो Diamantina fracture zone अपना नकरो को जगह located Indian Ocean located हला Indian Ocean located next question देखिबा where was all India liaison officer conference 2026 held मतलब कोइ दियंतु
Where was All India Liaison Officers Conference 2026 held? तो आंसर कौन है आपनकर जम्मू इज द करेक्ट आंसर कौन है जम्मू इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूछ आपनकर व्हिच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन आपनकर मत कोन को स्टेट होस्ट करि छै मत कोन मेघालय इज द करेक्ट आंसर मेघालय रे सीएम के कोनार्ड कंगल संगमा आपनकर गवर्नर के सीएस विजय शंकर आपनकर गवर्नर अछंती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच पोर्ट वाज रैंक्ड एज इंडियाज बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 व्हाट इज द करेक्ट आंसर व्हाट इज द करेक्ट आंसर Which port was ranked as India's best performing container port in the World Bank's Container Port Performance Index 2025? तो ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर 22nd ग्लोबली हमें जब देखिबा एठी आपनकर देखिया को मिली कोन देखंतु बेस्ट हमर वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स रे आपनकर बेस्ट पोर्ट देखिया को मिली के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देखिया को मिली व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम whose validity was recently extended till 31st August 2026 to provide credit guarantee support for microfinance institution what is the correct answer तो आंसर कोन गेला आपनकर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0 क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0 The recently tested Made in India C295 aircraft. The recently tested Made in India C295 aircraft is primarily designed for which type of operation? What is the correct answer? Is primarily designed for which type of operations? So the answer is tactical military transport operation is the correct answer. Tactical military transport operation is the correct answer. Next question देखिएगा Angkor Thom recently seen in news is located in which country? Angkor Thom आपनकर को जगह मत कोन तो कैम्बोडिया इज द करेक्ट आंसर कैम्बोडिया आंकोर वाट में देखिथिले एटी आंकोर थम कोठी अछि कैम्बोडिया देखिया को मिलछि कोन बाय न्यूज थिला आर्कियोलॉजिस्ट माने को डिस्कवर करछन कि 12th सेंचुरी हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ए एंशिएंट रॉयल पैलेस भीतर हमको देखिया को मिलछि बहुत पुराना दिन समय देखिबा आज रो करंट अफेयर्स में इंक्लूड अछि कि नहीं आज रो करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं आज एटी ऐड करा जाय ना लास्ट को ऐड करा जाय नहीं ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट अपन करो सारथी स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड रिफॉर्म्स टास्क फोर्स फॉर होलिस्टिक आईटीआई ट्रांसफॉर्मेशन सारथी अगेन रिपीट करूची स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड रिफॉर्म्स टास्क फोर्स फॉर होलिस्टिक आईटीआई ट्रांसफॉर्मेशन इज एन अपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर्म्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री तो आंसर है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द करेक्ट आंसर मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द करेक्ट आंसर व्हाट इज द थीम ऑफ द 11th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग व्हाट इज द थीम ऑफ 11th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग तो ध्यान रखना इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 हला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची नेटवर्क सर्वे व्हीकल वे रिसेंटली डिप्लॉयड नेशनवाइड बाय व्हिच मिनिस्ट्री नेटवर्क सर्वे व्हीकल वे रिसेंटली डिप्लॉयड नेशनवाइड बाय व्हिच मिनिस्ट्री तो ध्यान रखना आपनकर मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज द करेक्ट आंसर व्हिच कंट्री एटा रिपीट हे लागिरे ये गला आपनकर हाँ तपनोली ओरांगोटांग एक क्वेश्चन करंतु तपनोली ओरांगोटांग कथा मैं कहूची तपनोली ओरांगोटांग दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज फाउंड इन व्हिच कंट्री व्हाट इज द करेक्ट आंसर को जगह मते कोन तो आंसर कोन जे आपनकर इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर कोन है गला इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडियाज फर्स्ट 8-lane टनल इज बीइंग बिल्ट बीनीथ व्हिच टाइगर रिजर्व इंडिया रा प्रथम 8-lane नाने क्लास होला इंडिया रा प्रथम 8-lane टनल इज बीइंग बिल्ट बिटवीन व्हिच टाइगर रिजर्व तो ध्यान सकना आपनकर मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर इंडिया फर्स्ट 8-lane टनल इज सेट टू ओपन बीनीथ द मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व Tetanus, which was recently reported to be resurging in the USA, is caused by which agent? Tetanus आपनकर को एजेंट द्वारा देखिया को मतलब कौन तो ध्यान रखना बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर Tetanus बैक्टीरिया द्वारा देखिया को Tetanus once considered nearly eradicated is resurging in the United States and tetanus is serious bacterial infection. Prime Minister Narendra Modi was recently conferred with the Order of the White Double Cross First Class by which country? मोदी जी एबे रिसेंटली गोटे अवार्ड पाइछन्ती को कंट्री द्वारा अवार्ड पाइछन्ती मते को तो कंट्री ना कोन गेला स्लोवाकिया इज द करेक्ट आंसर कंट्री ना कोन गेला स्लोवाकिया इज द करेक्ट आंसर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एठी अवार्ड पाइछन्ती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोच द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री द विकसित भारत हां Youth Parliament 2026 has been launched by which ministry? तो Minister of Youth and Youth Affairs and Sports is the correct answer. Ministry of Youth Affairs and Sports is the correct answer. Next देखिए
कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर गला आपन आरडीएस इज द करेक्ट आंसर. रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर. कवच आपन हमर जो ब्रेकिंग सिस्टम टामो हां हमर जो इंस्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम कहार हमर ट्रेन रो हम कहि परिबा रेलवे रो इंस्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम को कवच सिस्टम कहउछ है ना से कथा को आउछ. हां नेक्स्ट देखिबा which ministry launched the WT Amrut, India's first dedicated wind turbine supply chain management? हला मारुत रु मारुत कहले कोन पवन आपण आनी परत WT कहले wind turbine. हां wind turbine supply chain management portal गोटे करा हेछि हला. तो wind turbine supply chain management portal गोटे बना हेछि के बनै छै मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनै छै हला. तो जहा द्वारा कि इंडिया आत्मनिर्भर बनि परिबो एनर्जी फील्ड रे wind turbine थ्रू रे जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर छी ताकू यूज करके हम इंडिया आत्मनिर्भर बनि परिबो एठी इलेक्ट्रिसिटी को नै. नेक्स्ट देखिबा कार्बी आंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट. कार्बी आंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट, बिहू पेपा एंड देउरी हैंडलूम प्रोडक्ट which were recently received GI tags are the product from which state? What is the correct answer? कार्बी आंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट, बिहू पेपा एंड देउरी हैंडलूम प्रोडक्ट which were recently received GI tag are the product of which state? So answer Assam is the correct answer. Assam is the correct answer. ठीक अछि जेबा आगु को बढ़िबा. Atal Tinkering Labs. Atal Tinkering Labs bridge was launched by India and which country to strengthen bilateral innovation cooperation? Atal Tinkering Lab कथा कहूछ तो आंसर कोन गला आपनकर फ्रांस इज द करेक्ट आंसर. फ्रांस इज द करेक्ट आंसर. ऑटो टिंकरिंग लैब इंडिया फ्रांस अपन लॉन्च करछन. इंडिया फ्रांस ऑटो टिंकरिंग लैब ब्रिज टू स्ट्रेंथन बायलैटरल इनोवेशन कोऑपरेशन. व्हाट इज आयुषन स्टेटस ऑफ ग्रेटर हॉग बैजर? ग्रेटर हॉग बैजर आयुषन स्टेटस कोन मते कह कहि परिबे. देखो मु केवल क्वेश्चन आंसर मेजर फोकस करूछ. हमें सप्ताहिक क्वेश्चन आंसर को हमें डिस्कशन करले मुझे चेष्टा करी मंथली रे आपन टिके एक्स्ट्रा कंटेंट एक्स्ट्रा आनिया पई. मंथली जल्दी आसीबो ने थरो मंथली लास्ट मंथली मु नै दीटा को मंथली एकावले नेबी मे और जून मास रे एकावले नेबी नैथली मते सेटा सैटिस्फाई लागि नथिला. मे और जून मास रे मंथली एकावले नेबी समय टिके लागिवो. इट विल टेक टाइम बट बेटर वे पढिबा. मंथली टा को मु 2 घंटा न 3 घंटा भलिया पढिबे आपन मानकर हला. मंथली करंट अफेयर्स 3 घंटा 4 घंटा भी जाई पारे. मास जागर 3-4 घंटा तो देई परिबा ना हमें. मास जागर तो 3-4 घंटा देई परिबा कि देई परिबानी हला. चलो ना आगु देखिबा. व्हाट इज द आयुषन स्टेटस ऑफ द ग्रेटर हॉग बैजर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो आंसर करले वल्नरेबल इज द करेक्ट आंसर. द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व हैज रिलीज्ड द फर्स्ट साइंटिफिक असेसमेंट रिपोर्ट ऑन ग्रेटर हॉग बैजर. आपनकर आयुषन स्टेटस कोन गला वल्नरेबल इज द करेक्ट आंसर. यस ओडिशा करंट अफेयर्स भी आसीबो सर. यस 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 ओडिशा करंट अफेयर्स स्पेशल सेशन आसीबो प्रति मास रे. मु डेडिकेटेडली करंट अफेयर्स पई एगन मु सबले कहूची नुवा नुवा किछ करबा नै बटे थरा आ गोटे मु टीम प्रॉपर भाबी छी गोटे टीम क्रिएट करबी जोटी कि हम करंट अफेयर्स पर आ रिसर्च करबा आ एक्स्ट्रा ऐड करबा. एडी जति कि भी जिंस आसुची आपण मन कहते जदी करंट अफेयर्स टीम रे के जोड़िबा को चाहिबे समस्त जानि समस्त चाहिबे आपण मन जानि छै बट एक्चुअली वैल्यूएशन आपण ऊपर के अछि कि आपण लागु नै सर मो पाकर वैल्यूएशन अछि मु एक्स्ट्रा जिंस करि परिबे एक्स्ट्रा जिंस हेई परिबो हला. तो निहाती मते जणैबे आमे निहाती ता ऊपर काम करबा. मु तो निहाती आनिबी मो नंबर तो तुमे जानि छ मेसेज करिवो मु निहाती रिप्लाई देबा को चेष्टा करछि हला. 848814 हला. ओडिसा रो स्पेशल सेशन आसीबो. मु कहितली कि वीकली आमे कोन करबा वीकली करंट अफेयर्स नॉर्मल रिवीजन करबा. देखियो वीकली करंट अफेयर्स आमे नॉर्मल रिवीजन करबा. ता संगे आ गोटे जिंस आपण करबा आमे मंथली ओडिसा रा कवर करबा और 15 दिन ओडिसा कवर करबा हला. ठीक अछि. प्रधान बैच के सब्सक्रिप्शन नहीं काली टू लाइव क्लास स्टार्ट हम. अच्छा हाँ गोटे कथा मु काली टू पेड बैच रे भी करंट अफेयर्स पढ़ाइबा आरंभ करूचे. काली टू मु बैच रे भी करंट अफेयर्स पढ़ाइबा आरंभ करूचे हला. चलो ठीक है. Which city recently become India's #1 rooftop solar city overtaking Surat? What is the correct answer? Which city recently become India's #1 rooftop solar city overtaking Surat? तो ध्यान से करना Lucknow is the correct answer. Next देखिए World Sea Turtle Day is celebrated every year on which day? World Sea Turtle Day प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करते हैं मत कह दियो ठीक. तो ध्यान से करना जून 16 is the correct answer. जून 16 is the correct answer. World Sea Turtle Day. Next देखिए हाँ Giant's Causeway that was recently seen in news is located in which country? Giant's Causeway आपनकर को कंट्री लोकेटेड? आयरलैंड रे लोकेटेड. कोठी आयरलैंड रे लोकेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
नेक्स्ट होची द मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। द मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना वाज लॉन्च बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराई छै आपण कर यूपी इज द करेक्ट आंसर। हां यूपी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हां नेक्स्ट क्वेश्चन को आपण कर व्हिच स्टेट लॉन्च्ड ए ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम फॉर स्टूडेंट अप टू क्लास 12? ब्रेकफास्ट और मिल्क स्कीम 12 क्लास जाय आपण को स्टेट गवर्नमेंट करछ मते को? तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। हला तेलंगाना लॉन्चेस फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर इंटर स्टूडेंट जोतरे के न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट दिया जे आपण को 1.92 लाख स्टूडेंट मन को ये बेनिफिट करिवो। बजेट 180 कोटी। बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एजुकेशन, बेटर फ्यूचर। ऑब्वियसली हेल्दी स्टूडेंट माने बेटर करि परिबे। बट ब्रेकफास्ट देखो हमर मिड डे मील स्कीम थिला बट ब्रेकफास्ट नथिला। ब्रेकफास्ट मध्यम पिला मानक पय एठी व्यवस्था करा जाउची। हला बहुत इंपोर्टेंट के करछि? तेलंगाना करूछि। हला तेलंगाना करूछि। चला आगु देखिबा। आगु देखिबा। तेलंगाना गला केन विलियमसन जे की रिसेंटली अनाउंस करछन रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू व्हिच कम्युनिटी? मत कहंतु को कंट्री सर को कंट्री? क्रिकेटर जने कंट्री ना होची न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। केन विलियमसन न्यूजीलैंड और केन विलियमसन ना मन पड़ला माने केते जे मेमोरीज हमर रिफ्रेश हो जाए नहीं करे। हां केते जे मेमोरीज रिफ्रेश हो जाए मते कहले टिके विलियमसन। वर्ल्ड कप रो स्टोरी ही सब मन पड़ जातो बहुत जण कर बट जदी मन पड़ुनी इट्स ओके लीव इट। आपण मानक पय टेंशन नबा जरूरी नै सेटा। प्रोजेक्ट हिनिची जे जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? तो मते कहि दियो प्रोजेक्ट हिनिची कथा कहू छेठी या के जण आंसर ठीक कहू छथि। ट्राई टू आंसर। प्रोजेक्ट हिनिची आपण मानकर मणिपुर देखिया मिलु छै। हला फास्ट हार्वेस्ट ऑफ द ग्रीन पीज अंडर प्रोजेक्ट हिनिची। ग्रीन पी आपनकर एठी हार्वेस्ट कथा कोआ होछ। नेक्स्ट देखिबा। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय? वर्ल्ड रो ब्लड डोनर डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय? दिनटा होछ आपनकर जून 14। खणा गेला जून 14 इज द करेक्ट आंसर। इंडियन एस्ट्रोनॉमर रिसेंटली डिस्कवर्ड 5 मिलीसेकंड पल्सर्स यूजिंग व्हिच टेलीस्कोप? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आंसर कना आपनकर जियांट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम। युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम आपनकर को हमर कोंतु को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराय तो आंसर कला वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखंतु ए न्यू स्पीशीज ऑफ लिंस स्पाइडर नेम्ड हमातलिवा मालगिन was recently discovered in which state? What is the correct answer? New species of link spider आपनकर नाना कोन मेघालय रे आपनकर देखिया मिलै छै। एक्सरसाइज पीस ब्लैक का संगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज गोटे आपनकर ऑस्ट्रेलिया संगे अलग कंट्री मान को एक्सरसाइज पीस ब्लैक आपन देखि परिबे एठी पाखा पाखा 18टा कंट्री मान एठी पार्टिसिपेट करूचंती। क्रॉन्स डिजीज आपनकर रिसेंटली न्यूज रे थिला। एटा को टाइप रो डिजीज ता? क्रॉन्स डिजीज आपनकर न्यूज रे थिला। आपनकर ए गोटे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। क्रॉन्स डिजीज ता को टाइप रो डिजीज? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ए न्यू ब्रायोफाइट प्लांट नेम्ड इंडोकोलिया देवेंद्राई was recently discovered in which state? कह दियो आंसर कौन हम? तो आंसर कौन? केरला इज द करेक्ट आंसर। Usutu virus that was recently detected in the Scotland for the first time is primarily spread by which organism? कहतु उषुतु भाइरस आपनकर मस्किटो द्वारा हमको देखिया मिलै छै। नेक्स्ट देखिबा। द हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग कैंसर ट्रीटमेंट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग कैंसर ट्रीटमेंट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? तो आंसर गला महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। कोन गला? महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द टीडी एंड डीपीटी ट्रिपल वैक्सीनेशन कैंपेन इन जून 2026? व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द टीडी एंड डीपीटी ट्रिपल वैक्सीनेशन कैंपेन इन जून 2026? तो आंसर गला गुजरात इज द करेक्ट आंसर। हला डिप्थेरिया टिटानस या पई आपन मानकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम करा होची कि आपन मानकर छोट पिला माने केमती सेत्रु बंचिक रहिबे। नेक्स्ट देखिबा। सरिंदा द क्वीन अपुल एंड रिसा पैचरा रिसेंटली सीन इन न्यूज द जीआई टैग फ्रॉम व्हिच स्टेट?
ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କ୍ୱିନ୍ ପାଇନାପଲ୍ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ତ୍ରିପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବା ଦରକାର ହେଲା। କ୍ୱିନ୍ ପାଇନାପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ସରିନ୍ଦା କଥା ଦେଖିଲେ, ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ତ୍ରିପୁରାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଛି GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା Which Indian city is the host of Senior Asian Fencing Championship 2026? Which Indian city is the host of Senior Asian Fencing Championship 2026? तो ध्यान से कौन आएगा? New Delhi is the correct answer. The Fencing Association of India has announced India's senior team for Senior Asian Fencing Championship 2026. Okay, next देखिए next coach is the Yoga Park. The Yoga Park portal was launched by which ministry? The Yoga Park portal आपनकर को मिनिस्टर द्वारा लॉन्च कराई। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द योगा पार्क पोर्टल आपनकर मिनिस्टर ऑफ आयुष द्वारा कौन कराई लॉन्च कराई का द्वारा कराई मिनिस्टर ऑफ आयुष द्वारा लॉन्च कराई। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्थ केयर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज टू प्रोवाइड एडवांस फ्री ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट इन रिमोट रीजन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? What is the name of the healthcare initiative launched by the Armed Force Medical Service to provide advanced free ophthalmic treatment in remote region? तो ध्यान से कौन है आपनकर ऑपरेशन दृष्टि इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन दृष्टि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो व्हाट इज द थीम ऑफ द नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 organized by Department of Social Justice and Empowerment? What is the theme of नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 organized by the Department of Social Justice and Empowerment? तो ध्यान से कौन है नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान। ओके नेक्स्ट देखिए which institute is home to India's first center of design excellence in nuclear engineering? Which institute is home to India's first center of design excellence in nuclear engineering? तो ध्यान से IIT Hyderabad is the correct answer. IIT Hyderabad is the correct answer. Next question देखिए next question कोची who are the author of the book Agathiar the Unifier? Who are the author of the book Agathiar the Unifier? What is the correct answer? Agathiar the Unifier क्या आपनकर समा भट्ट एंड डॉक्टर M.N. सुधा। समा भट्ट एंड डॉक्टर M.N. सुधा है। नेक्स्ट देखिए द 9th एशिया डेंगू समिट। द 9th एशिया डेंगू समिट वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री? द 9th एशिया डेंगू समिट आपनकर को कंट्री रे देखिया मिली मते कोनतु सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। द 9th एशिया डेंगू समिट आपनको को देखिया मिली सिंगापुर देखिया मिली। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू द सेंसर टावर्स ऐप परफॉर्मेंस इनसाइट्स रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसर टावर ऐप परफॉर्मेंस इनसाइट रिपोर्ट व्हिच एप्लिकेशन बिकम द मोस्ट डाउनलोडेड डिजिटल वॉलेट ऐप ग्लोबली? एटा बढ़िया प्रश्नटे परीक्षा रे सीधा सीधा प्रश्न आसी परिबो। कंप्यूटर स्किल टेस्ट सरी गलन ना कोन पूरा फ्राइडे मैराथन टाइप रो कंप्यूटर स्किल टेस्ट रे एमसीक्यू आस्थिला कौन स्किल टेस्ट पे आसी गलेनी कि देखिया स्किल टेस्ट पिला माने कोन ग्रुप रे कहिलेनी किछि देखिया गोटे सेकंड देखि दबा टीसीएस रे क्वेश्चन थिला ना आसंत नि कि एबे जाय स्किल टेस्ट काहे किछि के बिला कहि ना पिला माने नहीं स्किल टेस्ट पे माने मत काहे किछि कहि ना देबे केमते कोन क्वेश्चन आसला देखिया कथा हबा हला क्लास ता सरी जाऊ मु देखुछ। ओके फोन पे प्रोजेक्ट जीआईबी प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके सरी गला कथा हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आयुषन स्टेटस कोन क्रिटिकल एंडेंजर्ड हला। टाइपिंग रो एक्सपीरियंस केम थिला जे भी एठी स्किल टेस्ट के अच्छ ताले टाइपिंग रो एक्सपीरियंस कोन थिला मते कुह। International Day of Family Remittances is observed every year on which day? International Day of Family Remittances is observed every year on which day? तो ध्यान से वाला जून 16 is the correct answer. June 16 is the correct answer. है ना? Next देखिए Jardalu mango. Jardalu mango that was recently seen in news is a famous mango variety from which state? Jardalu mango गोटे famous mango variety आपनकर को स्टेट रे मते कोन तो बिहार is the correct answer. Jardalu mango बिहार is the correct answer. Next question देखिए Juno which recently released its first scientific result on the neutrino flavor oscillation. Juno जे recently release करता प्रथम scientific result on the neutrino flavor oscillation is located in which country? तो country ना हो China is the correct answer. China is the correct answer. Next question देखिए हाँ Tasgaon lift irrigation scheme. Tasgaon lift irrigation scheme was launched by which state government? What is the correct answer? Tasgaon lift irrigation scheme was launched by which state government? तो ध्यान से करना महाराष्ट्र is the correct answer. कौन है गला महाराष्ट्र is the correct answer. Next question देखिए next question को जी अमनगढ़ टाइगर रिजर्व is located in which state? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व is located in which state? तो स्टेट ना कौन है उत्तर प्रदेश is the correct answer.
यूपी इज द करेक्ट आंसर, द अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखिबा आईएनएस तर्कस, आईएनएस तर्कस that was recently seen in news belongs to which class of warship? INS तर्क आपनकर तर्कस that was recently seen in news belongs to which class of warship? तो आंसर गला तलवार class is the correct answer। कोन गला तलवार class is the correct answer INS तर्कस। Which institution developed the chili variety of LCA 625 and LCA 643? Okay, तो कौन वाला RHRS रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन गुंटूर इज द करेक्ट आंसर। जी के चिली वेराइटी बनी LCA 625 और LCA 643 आपनकर बनी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर कोन देखंतु वी स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट इन FY25 अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम ए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कोइ दिन आंसर कोन हो? कौन है टिके रही कुआड़े जीवी कहीं रही कौन होगा ठीक रही कौन होगा तो आंसर कौन होगा जानिले किए आप मत कहतु किए फिस्कल डेफिसिट बहुत माइनस रही मेघालय इज द करेक्ट आंसर। ओके मेघालय इज द करेक्ट आंसर। अधिका ओडिशा भी गोटे बेट माने भल फिस्कल डेफिसिट मेंटेन कराई भल माने बहुत माने खर्च कराई ओडिशा रे लिमिट न देखिकी। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द आइसोन रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ द नो बिल डॉग व्हिच वाज रिसेंटली recorded at Pong Lake Wildlife Sanctuary? What is the correct answer? तो आंसर कौन है लिस्ट कौन इज द करेक्ट आंसर? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे आपनकर प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए जून 17 रे करा जाए। एलिफेंट डे केबे करा जाए, लायन डे केबे करा जाए, टाइगर डे केबे करा जाए, डॉल्फिन डे केबे करा जाए हला आ कौन रहा को डे को पशु पक्षी विषय अच्छे मन पकड़े ठीक है। देन ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप, ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप आपनकर कोडी लोकेटेड मत कहंतो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर हला तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर ग्रेप्स 3। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया वाज डेवलप्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल आपनकर का द्वारा डेवलप कराई छि? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर स्किल टेस्ट सरला हाँ परेश मंत्री क्वेश्चन स्किल टेस्ट सरला केमते स्किल टेस्ट मते को थिला केमती थिला स्किल टेस्ट ये कह शुणा केमी है स्किल टेस्ट समस्त जी भी स्किल टेस्ट अच्छे केमी कौन स्किल टेस्ट कर मत कह हेल्प होती तुम जहाँ एक्सपेक्ट कर भल हो खराब मत जाना आम जाना ना समस्त जाना दरकार निहाती प्रथम थर गोटे एमती फॉर्मेट आसी से फॉर्मेट आपने कौन चेंजेस आसला केमती अपियर कर कथा व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द चिल्ड्रेन्स क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026? ओके व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द चिल्ड्रेन्स क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आंसर कौन है? आंसर है आपन यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड इज द करेक्ट आंसर। द जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, द जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म इज ए बायलैटरल कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके निहाती भल होइतो निहाती 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 द जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म इज ए बायलैटरल कार्बन क्रेडिटिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री? तो आंसर होला जापान इज द करेक्ट आंसर। द सी बॉक्स पोर्टल कथा कुआ होछ, द सी बॉक्स पोर्टल कथा कुआ होछि लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। द सी बॉक्स पोर्टल आपन के माने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्टल सेक्सुअल हारासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स तक कुआ होछि सेक्सुअल हारासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स सी बॉक्स हम ताको देखुछंती। नेक्स्ट देखिबा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? तो डेट आउज आपन जून 18 इज द करेक्ट आंसर। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जून 18 प्रति वर्ष ऑब्जर्व करा जाए। ए वर्ष थीम होछि सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज हला सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज होछि ए वर्ष थीम। नेक्स्ट देखिबा पोवाई लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? पोवाई लेक आपनकर को स्टेट लोकेटेड मते कहि दियंतु? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके पोवाई लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो आंसर होला महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। ओके महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आछिबा अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 व्हिच इंडियन सिटी इज रैंक्ड सेकंड इन एशियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर आफ्टर बीजिंग व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो आंसर कौन बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर okay Bangalore is the correct answer San Andreas fault that was recently seen in news is located in which country San Andreas fault आपनकर को country located मत कोन आंसर कोन हो United States is the correct answer World Day to combat desertification and drought is observed annually on which day तो day कोन गेला आपनकर June 17 is the correct answer June 17 is the correct answer next question देखिबा हां Venus flytrap a small perennial carnivorous plant Venus flytrap a small perennial carnivorous plant is native to which country तो country ना कोन गेला United States is the correct answer USA is the correct answer okay right arise skill test analysis कथा बा मासी भी बिलांग संग कथा आरता है कि आनी भी केमति कोन हेच कोन नाही हला तो नेक्स्ट देखिबा द Thamirabarani river which was recently seen in news flows entirely through which state Thamirabarani river आपनकर flows entirely through which state आपनकर आंसर कोन गेला आपनकर Tamil Nadu is the correct answer National Pharmaceutical Pricing Authority was established under which ministry? National Pharmaceutical Pricing Authority was established under which ministry? Ministry of Chemical and Fertilizer is the correct answer. Ministry of Chemical and Fertilizer is the correct answer. The Mombasa Declaration. The Mombasa Declaration recently adopted by 15 countries aims to combat which issue? The Mombasa Declaration recently adopted by 15 countries aims to combat which issue? So the answer is illegal fishing is the correct answer. Illegal fishing is the correct answer. Mombasa Declaration kotha kuha illegal fishing ko atkeya pai. India International Institute of Democracy and Election Management was established by which organization? India International Institute of Democracy and Election Management was established by which organization? The Election Commission of India is the correct answer. Election Commission of India is the correct answer. Next dekhiba the 𝐒𝐀𝐄 dam that was recently seen in news is located along the border of which two state? The 𝐒𝐀𝐄 dam that was recently seen in news is located along the border of which two states? तो आंसर वाला उत्तराखंड and हिमाचल प्रदेश is the correct answer. 𝐒𝐀𝐄 dam उत्तराखंड and हिमाचल प्रदेश. Next question देखिए who has been appointed as the new chairperson of the National Statistical Commission? National Statistical Commission और नया chairperson किए? Dr. Shaival Chattopadhyay is the correct answer. Dr. Shaival Chattopadhyay is the correct answer. Next question देखिए Bharat Buildcon 2026 that was recently inaugurated in New Delhi is associated with which sector? Bharat Buildcon टा को sector से associated? What is the correct answer? Bharat Buildcon टा प्रमाण करो construction and building materials से associated. Buildcon जानी मानो Khan Quest exercise Khan Quest को country host करछ मते को exercise Khan Quest को country host करछि Mongolia host करछि की host करछि Mongolia host करछि. What is the theme of the first BRICS MSME forum 2026 held in Agra? What is the theme of the first BRICS MSME forum 2026 held in Agra? तो ध्यान से वाला building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Khadi Rozgar Utsav 2026 was organized in which district of Haryana? मतलब कौन district of Haryana अपन को देखा कौन-सी तो ध्यान से वाला Bhiwani is the correct answer. Bhiwani is the correct answer. Khadi Rozgar Utsav 2026 was organized in which district of Haryana? तो ध्यान से वाला Bhiwani is the correct answer. The reward program that was recently seen in news is assisted by which organization? The reward program आपनकर कहा द्वारा इट assist कराई छै ध्यान से कोनला World Bank is the correct answer. Recently National Rainfed Area Authority held a meeting on the draft National Technical Guideline for improved watershed management under the reward program. The 15 million year old fossil recently discovered in Odisha's Baripada fossil bed belong to which epoch? What is the correct answer? The 15 million year old fossil recently discovered in Odisha's Baripada fossil bed along to which epoch? तो ध्यान संगला Miocene is the correct answer. कौन है Miocene is the correct answer. Next question देखिए which institute has developed the BDIM electrolyte additive to improve the performance of aqueous zinc ion batteries? What is the correct answer? Which institute has developed the BDIM electrolyte additive to improve performance of aqueous zinc ion batteries? तो ध्यान से Institute of Nanoscience and Technology Mohali is the correct answer. Institute of Nanoscience and Mohali is the correct answer. Okay. जीवा next देखिए next question the World Gold Council recently in the news is headquartered in which city? The World Gold Council अपना recently news रे थिला is headquartered in which city? तो ध्यान से London is the correct answer. कौन है गला London is the correct answer. World Gold Council आपन को देखिए मिलछि London देखिए मिलछि. Which institution become India's highest ranked institution
इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रे मते कोन दोडी आंसर कोन हबो ओके पिला मेसेज कले स्किल टेस्ट बढ़िया जाइए सर बढ़िया जाइए स्किल टेस्ट ओके व्हिच इंस्टीट्यूशन बिकम द इंडियाज हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग द आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली इंडिया आपनकर आईआईटी दिल्ली एमआईटी आपनकर मैसाचुसेट्स रो जोटा जाइए आपनकर से टॉप रैंक रखी बाकी गोटा तो आप देखिए कौन है नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड सिकल सेल डे प्रति वर्ष कौन ऑब्जर्व करा जाए जून 19 रे वर्ल्ड सिकल सेल डे प्रति वर्ष कौन ऑब्जर्व करा जाए जून 19 रे करा जाए रिसेंटली द फर्स्ट ऑफ द 6 इंडिजिनस एयर क्रूशन व्हीकल वाज इंडक्टेड इनटू सर्विस बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन व्हिच स्टेट व्हाट इज द करेक्ट आंसर recently the first of the 6 indigenous air cushion vehicle was inducted into service by Indian Coast Guard in which state तो आंसर है गोवा is the correct answer बस एतिक रहला कथा हाँ सप्ताह जगह हम करंट अफेयर्स को रिवीजन करने ले थरे केमती लागला सेशन कमती कोन लागो क्वेश्चन आंसर कला मु केमती कोन पचारछु एटी पचार किछ नाही हला आ ता सहित आपण माने जो मैंने प्रिपेरेसन कर करंट अफेयर्स लास्ट ईयर करंट अफेयर्स बही दरकार वर्षकर एवं कौन है कि वर्षकर करंट अफेयर्स एग्जाम आसीगला धीरे धीरे जब आपको बही दरकार तेल बही मगे पारे आप फ्लिपकार्ट सर्च करेंगे कि आमाजन सर्च करेंगे गूगल सर्च करेंगे प्रज्ञान ओडिशा इयरली करंट अफेयर्स सर्च कले आपको बही मिल है बाकी ता सागर ओपीएससी एसओ स्वाभिमान बैच भी ऑलरेडी चलती जॉइन करेंगे ओडब्ल्यूएससी सीजीएल मेन्स प्रगति बैच आप चली एबे गोटे काम करूँ जिते बैच सब अलग अलग बैच जॉइन करा दरकार नहीं मात्र 999 टंका मात्र 999 टंका 6 मंथ सब्सक्रिप्शन जॉइन करनी 6 मंथ सब्सक्रिप्शन जॉइन करनी काम तमाम खेल खत्म ओके मात्र 999 ओके ता सहित जब आप बैच पाऊना लिंक जानी पाऊना ये नंबर मेसेज करेंगे 8599848814 ए नंबर रे मेसेज करेंगे निहाती आपको मु लिंक शेयर करदेवी 4टा मिस्टेक होगा आ कार केते भूल है कहले मते तुम आज भाया क्लास रे मु रिवीजन कर ओनली क्वेश्चन 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 देखिबो केतरा ठीक करछ केतरा भूल करिछ हला केतरा ठीक करछ केतरा भूल करिछ आ देखो कंटीन्यूअसली जोड़ी के रुह रेगुलर क्लास कर करंट अफेयर्स भी भल होबो कंप्यूटर भी भल होबो स्किल टेस्ट भी बेटर करिवो ता सहित तुम जहां भी टाइप रो माने कंप्यूटर करंट अफेयर्स जीके ए तीनटा जेतु मोर दायित्व रोच मु देखुची तो जहाँ भी असुविधा हम सब जिन कवर करवा सर ये सब बैच अदर सब्जेक्ट के स्टार्ट हम यही 4-5 दिन भर आरंभ होगा मुझे भाई आपर पॉलिटी और हिस्ट्री को लेकिन किसी स्पेशल सेशन नहीं आसबि आई होप आपने जॉइन करेंगे राति 8टा बजे आम जॉइन करवा किसी दिन सब दिन नुह किसी दिन आम कवर करवा तो आशा करुच्छे कोऑपरेशन रही भूल कले आज सेशन रू है तो निहाती मत कमेंट सेक्शन जनइबे आम अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन और प्लानिंग को जारी रखा बहुत धन्यवाद जॉइन कर थैंक यू ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑल द बेस्ट नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां समलेई रही।